everybody. How are you guys doing? Well, I know right now you all would be super busy preparing and gearing yourself up for the upcoming JEE Main 2022 July session, isn't it? And students who could not perform that well in the June attempt or could not perform as per their expectations would definitely be aiming to make a strong comeback in the July attempt. And that exactly should be the attitude as well. So, to give you a push towards achieving your goal, I thought to come by and quickly share with you some very effective tips and strategies which, if you follow in these last 7 remaining days, it will certainly help you to boost your score and give your best shot in the exam. Okay? So without any further delay, let's get started. Quickly share this video with all your friends because as science says, people who help others stay happier and live longer. Okay? Also subscribe to the channel and I hope you have joined the Telegram group as well because all the daily quizzes, the session updates, PDF notes, everything is there and also you can resolve your doubts on Telegram. And now let's get started. First of all, let's talk numbers, let's talk data, let's talk fact. So that we can get a realistic understanding of what exactly are the areas जहाँ पे काम करके हम अपना score boost कर सकते हैं, improve कर सकते हैं. Let's see. Across shifts की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे calculus का weightage देख सकते हैं. Functions से just look at the number of questions that have been asked. On an average एक सवाल तो पूछा ही गया है. इसके बाद look at AOD's weightage. Oh my god, just look at this. So many questions from application of derivatives were there throughout shifts. And let me tell you people, they were doable questions. A lot of them were doable questions. करने वाले सवाल थे. Alright, then look at this. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत सवाल नहीं आए इस बार, लेकिन डेफिनिट से काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्यूपाइड अ गुड अमाउंट ऑफ शेयर इन द पेपर. लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. In fact, to everybody's surprise, इस बार exact differential equation के भी सवाल थे पेपर में, which is technically not in your syllabus, but they expected you to know it. और इसीलिए July attempt के लिए it is very important for you to at least solve a handful of questions based upon exact differential equation. क्योंकि उससे बहुत जल्दी आप differential equations के questions solve करके answer तक पहुंच सकते हो. So that is kind of a time saver method which you must know. Moving on to algebra, again super duper huge syllabus. I know algebra is really fat when it comes to the number of topics it contains, number of chapters it contains. But let's explore the weightage guys. Quadratic के हर shift में, almost हर shift में बड़े अच्छे doable प्यारे प्यारे सवाल थे. Okay, after which you can see sequence series जो हमेशा हम कहते हैं जरूर पढ़ के जाओ. Look at the share of questions. Oh my god, not even a single shift was there जिसमें sequence series से सवाल नहीं था. Okay, general term पे सवाल बोलो, telescopic series पे सवाल बोलो, the questions were there. After which look at complex. Pretty good questions. कुछ जगह ज्योमेट्री से सवाल भी थे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो बच्चों को टफ लगे हैं, डिफिकल्ट लगे हैं, या तो वो विजुअलाइज नहीं कर पाए या तो उनकी कैलकुलेशन काफी हैवी थी, काफी टाइम कंज्यूमिंग थी. सो देयर द स्ट्रगल वाज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स से सवाल थे, कई बार अच्छे डुएबल सवाल थे, कई बार टफ सवाल भी थे. नेक्स्ट लुक एट बाइनोमियल. Pretty good questions. Few could be cracked using shortcuts if you were aware of them. पर अगर अवेयर नहीं थे तो काफी लंबे मेथड यूज करके बाइनोमियल के सवाल करने वाले थे काफी शिफ्ट्स में, जिसमें बहुत टाइम लग सकता था. बट यू कैन सी द शेयर ऑफ बाइनोमियल हियर एज वेल. लुक एट मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. Favorite of all students. The questions were there. Good number of questions, on an average 1 to 2 questions per paper, and probability as well. Probability के कई बार कुछ easy सवाल भी थे, कुछ little bit challenging questions भी देखे थे हमने. I'm sure you would have seen the analysis of all the shifts. That's the very, very first step, people. You have to sit with each shift which happened in June. Solve it by yourself. We have done videos for every shift. You have to see those videos, see that analysis so that you can understand the examiner's mindset. You can understand सवालों को कैसे, किस best approach से solve करना था. Look at coordinate geometry.
हर जगह से क्वेश्चंस आए थे। एलिप्स एंड हाइपरबोला से सवाल का नंबर कम था, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर लेस, बट देयर वर इजी बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, बेस्ड अपॉन एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, सो द क्वेश्चंस वर देयर प्रिटी मच बेसिक स्टैंडर्ड फंडामेंटल वाले। थ्रू आउट कोऑर्डिनेट सवाल लेंदी बहुत ज्यादा आए पर डुएबल आए, आपको बनते थे, यू न्यू हाउ टू अटेम्प्ट देम, हाउ टू रीच to their answer. That was the good news. Vector 3D se again something which we always recommend students to study. It is vector 3D. Again, questions did come in the paper. You can see good number of questions were seen in the paper throughout shifts. Again, doable questions, पर as expected lengthy सवाल. तो यहाँ पे भी आपको विजुअलाइज करना या फिर मेंटल मैथ के साथ काम करना जरूरी था, और वो तभी हो पाता जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती। Okay, let's talk about trigonometry. This time, काफी shifts में, can you see this? Can you see this? काफी shifts में ट्रिगो के इतने basic standard वाले सवाल पूछे गए थे, which were like free के marks for students. ठीक है, तो हर बार बच्चे कंप्लेन करते हैं ट्रिगो से डायरेक्टली सवाल नहीं आता, पर इस बार थे। इनवर्स ट्रिगो के भी अच्छे सवाल थे और डायरेक्टली ट्रिगो से भी अच्छे सवाल थे। देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से यू कैन सी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो ग्राफ वाले सवाल भी आए थे जिसमें आप दो फंक्शंस को इक्वेट करके ग्राफ से आप निकालते हो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, सो इवन दोस क्वेश्चंस वर देयर व्हिच आर फ्रीबीज, राइट, फ्री के नंबर। एसओटी से बहुत सवाल नहीं थे एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एज वेल। सो इफ यू टॉक अबाउट एन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैलकुलस एंड अलजेब्रा दिस एक्वायर्ड लायंस शेयर इन द पेपर। ओके, ऑल्सो यू कैन सी कोऑर्डिनेट का 13% वेटेज, वेक्टर 3D का 12% वेटेज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का 6% वेटेज एंड जेई मेन टॉपिक्स जैसे कि आपका स्टैट्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इसका 8% वेटेज था। All right, so overall if right now I have to give you a judgment कि सबसे पहले आपको किसको टारगेट करना चाहिए for your July attempt while you are revising, then I would say give priority to high scoring and high weightage chapters। जैसे कि आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास आता है सीक्वेंस सीरीज, then you have your entire calculus, you have to master it. Point number 4, you have mathematical reasoning. Point number 5, you have statistics. And lastly, we have matrices and determinants. Okay? So these are the chapters which are easy with respect to the content that they contain, and यहाँ से सवाल आने ही आने हैं शॉर्ट, मैंने आपको डेटा दिखाया है। Okay, so you should prioritize revising these first because as I said, they are high in weightage and highly scoring chapters. But कई बार ऐसा हो जाता है कि इन chapters से भी जो सवाल आ रहे हैं, they are pretty challenging, they are pretty brainstorming. तो let's say आपको सवाल देख के लगा कि हाँ ये बन जाएगा, but midway you are coming and you're getting stuck. 3-4 स्टेप किए और उसके बाद ओहो हो अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो ये रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन तो छोड़ना था, तो फिर क्या करें? टू गेट दैट एस्केप यू हैव सम क्वेश्चन चैप्टर्स which you have to revise in the second phase. They include your vector 3D, basically vector and 3D geometry. Then you have your coordinate geometry. All right, and then lastly you have your trigonometry. ओके, एसओटी फिर भी छोड़ सकते हो, पर ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो से सवाल आए हैं। ओके, सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर रिवाइजिंग। गॉट इट पीपल? ऑल राइट, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडर एस्टिमेटेड टिप्स। Point number 1, if we are talking about revision, let me please remind you, and I have said this a lot of times in my sessions as well, it's not important how much you eat. What's important is how much of that can you actually digest. What I mean by that in simple words is, please play on your strengths. Yes, you have to understand that it is so important.
Basically, you have to do multiple revisions of those concepts, those chapters, those topics which you've already studied, you've already practiced and you are already confident about. क्योंकि इन आखिरी के थोड़े से दिनों में कुछ भी नया पढ़ोगे ना, it will only confuse you. So don't do that. And as I've said it already, I'm again saying it, your priority should be to revise thoroughly those chapters which are very, very high in weightage and are very, very high scoring as well. Okay, next thing which you have to keep in mind is कि जो जेई टीम होती है ना, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में. कोई फर्क नहीं पड़ता. They are not interested in that. What actually they want to test is how many questions can you solve correctly in that pressurized environment, in that stressful situation, where it is so difficult to control your nerves and calm your nerves down. उस वक्त आप कितने सवाल सही कर सकते हो? That is where this combination between speed and accuracy kicks in. And how exactly can you strike a balance between them? The answer is crazy, crazy practice. You have to give regular mock tests, people. This is non-negotiable. Have to understand your weaknesses, to understand your pattern of taking the paper, to understand how exactly does your temperament work. Because when you take a mock test in that time-bound setup, in a very strict time-bound setup, that is exactly what gives you a clear idea about how are you actually responding to the paper. Alright, also you have to practice more and more previous year questions. NTA Abhyas papers practice kar lo, but you have to practice. And one thing, जो कि lesson learned hai after exploring all the papers of June attempt, it is that you have to, while practicing, you have to expose yourself, deliberately you have to expose yourself to new and fresh variety of questions. Yes. पुराने सवाल, देखे हुए सवाल नहीं करने हैं. New type of questions you have to expose yourself to, because that will come as a challenge before you, and they will force you to think out of the box, to come up with new strategies, new approaches to crack the question, and that exactly will grow you. That exactly will add up to your knowledge. That exactly is the type of practice which you need to ace it in the July attempt. People understand you need new questions, and that is exactly what we are doing on our channel. We have this crash course. I'm sure you would have seen all the videos. We have tried to share with you a lot of new questions and a lot of shortcut strategies, a lot of alternative methodologies to solve the questions efficiently and quickly and correctly. If you haven't checked those sessions out yet, you must do that. They are really effective. A lot of students have benefited from it. You can do that too. Okay, so second point happened to be practice, which can help you improve your speed and accuracy balance. And third point, people, is wise question selection. Please understand, this is for your paper. Please understand that in your paper, भले आप कोई भी शिफ्ट उठा लो जून अटेम्प्ट की, सारे सब्जेक्ट्स में across physics, chemistry and mathematics, 50 to 60% of the paper in every shift was doable. And that is the area where you have to focus. आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो डुएबल सवाल हैं, जो आपको आते हैं, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि इतना आप विजुअलाइज तो करते रहते हो उस वक्त सवाल को देख के, तो आप उन सवालों को टारगेट करो इन द फर्स्ट राउंड. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको वहां से मैक्सिमम मार्क्स खींचने हैं. आपका एम होना चाहिए कि आप वो 50 to 60% वाले क्वेश्चंस को सही करके आओ. Your target should be to minimize that negative marking. And keeping that in mind, you have to do your practice right now when you are practicing the mock tests. There is alpha, beta, gamma strategy or round strategy, however you know, in the first round. When you are taking a glance at the entire paper, उस फर्स्ट राउंड में जितने भी सवाल आपको लगते हैं कि यार स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो बहुत छोटू सा है और सवाल जो है वो बड़ी 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा विद इन अ मिनट वाले, ऐसे 5-6 जितने भी सवाल है पहले उन्हें करो. Then in the second round you have to solve those questions जो आपको बनते हैं. You have solved them a lot of times before, you know how to crack them, but they are little bit lengthy.
और दे आर अ लॉट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड, अ लॉट ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व देयर, तो उनको आप सेकेंड राउंड में करो. एंड रियलाइज योर मार्क्स, योर एम इज टू गेट मार्क्स ओवरऑल इन द पेपर. तो वो मैथमेटिक्स से खींचो या केमिस्ट्री से खींचो या फिजिक्स से खींचो, दैट्स ऑन यू. You have to realize one more thing people, कि मैथमेटिक्स का पेपर अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं खोता है. तो वो पेपर विल कंटिन्यू टू कम लेंदी, इट विल कंटिन्यू टू कम ऑफ अ मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से टाइम स्टील करके मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा. ओके, कीप ऑल दिस इन माइंड. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज आपको मॉक टेस्ट इस बात को दिमाग में रख के देना है. ओके, हर मॉक टेस्ट के बाद ना एक बार शिद्दत से बैठो और अपना ऑनेस्ट क्रिटिक बन के, अपना ऑनेस्ट जज बन के अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो. ओके, आप देखो कि यार ये सवाल तो नहीं करने वाला था, मैंने क्यों इसमें टाइम वेस्ट किया, ये तो छोड़ने वाला सवाल था, है ना. क्यों मैं इमोशनली अटैच हो गई इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का था और क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, इसीलिए मैंने अपना ईगो अटैच कर दिया क्या इस क्वेश्चन से, कि ये तो मैं करके ही रहूंगी, और उसमें मेरे 10 मिनट चले गए, 15 मिनट चले गए. राइट, सो एनालाइज ऑल दोज थिंग्स. एनालाइज कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, एनालाइज कि आपका टेम्परामेंट कहाँ फ्लक्चुएट हुआ, आप कहाँ नर्वस हुए, आप कहाँ स्ट्रेसफुल हुए. एनालाइज कि आपने अक्रॉस सेक्शंस, अक्रॉस सब्जेक्ट्स टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का किया है और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो. Nobody can help you in this, people. You have to understand yourself. You have to introspect and make those improvisations in the next mock paper. It will take you a long way. Alrighty, so as it's written, you have to take the test. You have to analyze your mistakes. Promise yourself to rectify them once you have embraced them and understood how can you rectify them, and then apply all this in the next test. Got it? And now, before I take your leave, let me quickly share with you the marks versus percentile wala data for throughout the shifts of the June attempt. Just take a look. Take a good look. If you want, you can take a screenshot as well. कि यहाँ पे अगर 24th June shift 1 की मैं बात करूँ, which was considered as one of the toughest shifts here, 194 पे आ रखे हैं 99.5 percentile. You have 99.9 at 246. Alrighty. Also 179 पे आ रखे हैं 99.1. Can you see this? Can you see this? मतलब कि अगर आप एक रफ आइडिया हम ये बैठा सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, आउट ऑफ 30 अगर आप सिर्फ आधे 15 सवाल करने का एम करते हो, एंड नॉट जस्ट अटेम्प्टिंग देम, कंप्लीटिंग देम करेक्टली, एक्यूरेटली, विदाउट मेकिंग इवन एन आयोटा ऑफ मिस्टेक, then definitely you can aim for 60, 60, 60, 180 marks for sure. For sure. Okay, all you have to do is search for those 15 doable questions out of 30. So जो सिर्फ आधे सवाल करने हैं, तो उनको ढूंढना आपका वाइज डिसीजन होना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आप मॉक से ही कर सकते हो. ट्रस्ट मी, सिर्फ और सिर्फ मॉक से, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स देके. Cool people, are you understanding the importance of giving tests right now? That is a game changer, game changer. Okay, what is written over here? If you can't measure it, you can't manage it. It's very obvious. Suppose I'm going to the gym और मैं 1 महीने से gym कर रही हूँ. Okay, I'm doing the weightlifting, I'm doing all my training, but there is no mirror in the gym, there is no weighing machine. There is absolutely no tool, no machine through which I can measure how much success I have gained with this gym training. तो क्या मैं motivated रहूंगी? No, right? If I can't see it, I can't believe it. Similarly, if you can't measure it, you can't manage it. जब आप अपना मॉक टेस्ट पेपर एनालाइज करते हो, तो आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली खुद को फीडबैक देना है. पॉइंट नंबर 1, ये गलती की. पॉइंट नंबर 2, ये गलती की. इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड फीडबैक. इट शुड नॉट बी एन इमोशनल फीडबैक. इट शुड नॉट हैव एक्सक्यूजेस inside it. It should be very truthful, very, very strict, very, very honest feedback. Okay, you have to write it down so that it is registered in your head and you actually are indirectly promising yourself to not repeat that again. Also, one very small thing which I think I must tell you is कि जब भी आप अपना mock test दोगे ना, तो जो आपका rough work होगा,
उसको बहुत नीट रखना। मैंने इतने सारे टॉपर्स की आंसर शीट्स देखी हैं, उनके रफ वर्क में एक चीज कॉमन थी, दैट इट वाज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि सपोज आप रफ वर्क कर रहे हो, बीच में अटक गए, आपने सवाल अपना छोड़ दिया, आपको लगा ओह ये तो बहुत लंबा सवाल है, मैं इस पे बाद में आऊंगा, आई एम मार्किंग इट फॉर रिव्यू। ऑल राइट, फेयर इनफ। पर जब आप वापस उस पर आओगे तो आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा ना, आपका समय बचेगा, क्योंकि आपने वो रफ वर्क जहां तक भी किया होगा उसमें 3-4 स्टेप तो किए होंगे, तो आप उसके आगे से रिज्यूम कर सकते हो ना। Correct? So this is one very underestimated thing which you can use to save your time, increase your speed, and get more questions correct. And you know what? Do not get scared or demoralized when you realize that you are not able to perform that better in the first mock or the second mock. Take that as a lesson, take that as an experience, extract as many learnings as you can by taking the mock tests. And you know what? In the third or the fourth mock, when you do perform nicely, when you do perform better, when you are able to meet your expectations, give yourself a little treat. It will really improve your confidence. Okay? Remember, the only way to get progress is by following this equation. Pain plus reflection is what will lead to growth, is what will lead to progress. It's an equation which is 100% valid. It is true, it is correct, it always works. And now the next point is time management. Guys, you have to understand this कि इन बचे हुए 7 दिनों में आपको अपनी हर एक एक्टिविटी स्केड्यूल करनी है. You should have a fixed time for sleeping, for waking up, for studying, for eating. Everything should be scheduled. You have to make a strong, strict routine and you have to stick to it. You know, one thing which I have understood over time in my life is कि location has energy and time has memory. What do I mean? You know, when you sit in the same place to study every single day over months and years, that place acquires a certain kind of energy. और उस जगह पे आप जब भी बाद में जाओगे ना, आपको फोकस करने में बड़ी आसानी होगी, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी होगी, ज्यादा देर की सिटिंग लगाने में आपको आसानी होगी. दिस इज प्रूवन एंड टाइम हैज मेमोरी. कैसे हम रोज जिस टाइम पे खाते हैं हमको ऑटोमेटिकली उसी वक्त भूख लगती है, राइट? दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यार हर चीज का स्केड्यूल रखो. जो भी आपका जेईई मेन का टाइम होता है पेपर देने का, उसी वक्त पढ़ाई करना या मॉक टेस्ट देने की आदत डालो, so that you are programmed that way. Okay? तो ऐसा आप करोगे ना तो आपको उस दिन एग्जाम के दिन अपने टेम्परामेंट इश्यूज को हैंडल करने में बड़ी मदद होगी, बहुत ज्यादा हेल्प होगी. Okay? Well, the last point is please reduce the distractions but increase the motivation. You did not come this far to only come this far. It's just the last 7 days, people. Give your best shot and nobody can stop you from smashing the July attempt. Okay? One tip, whenever you feel doubtful, whenever you feel anxious, first of all, 4 counts breathe in, 4 counts breathe out, and also please engage yourself in affirmations. खुद के साथ रोज 2 मिनट 5 मिनट बैठो and self talk करो. I will do it. I can do it. Whatever I have studied is retained in my head. I am confident that I can pull this off. I am confident that I can perform to the best of my ability and I will give the best shot. Self-talk से बहुत फर्क पड़ता है. You know, these affirmations, this breathing technique, all these things help you to sail through the challenging moments, the challenging situations that come in your life, especially when such an exam is around. Okay? Alrighty then, on this note, it's me Bhumika signing off. Just follow all the tips that I've shared with you and I can vouch for one thing, that they will certainly help you to up your score in the July attempt. Okay? Take care, people. I hope you guys kill it in July. All the very best. We'll see you soon. Bye-bye.